Yeah, so uh, today I'm going to start a new course on Excel, and this is the first beginning of the session. So I will just give you some brief idea about myself. I work as a business analyst in a US based company, and where I do work on database and Excel. So first I will try to start the Excel and how does it fill the requirement of the companies. So today we are going to start with very basics. So I will give you some brief idea on that. Let's say anything you write on Excel, let's say 2 or A, B, 3. So what is the difference you see? So when you write number, it go right side. When you write a letter, it go left side. So this is the basic difference which Excel determines, and it shows on the sheet. Okay. Now there are different tabs also which are available in Excel file. So we'll go through every tab in detail, but today this is the basic session. So I will just go through all the tabs in brief way. So this is the home tab, and it contains like wrap text, margin center, and different options. Conditional formatting is there, and we have insert tab where we can insert chart and pivots and many other things are there, very useful thing. Now the third tab is page layout. How do you want to see the page? How do you want to print? How, what kind of margin it should have? So it is like a orientation of the page. Now again we have the formula where we can find many formulas and helpful formulas. Anyway, I will teach you every formula, but this is very useful tab if you are a beginner. So tab is nothing but cleansing the data. When you get the raw data, you try to cleanse it, you try to filter it out in a correct way. So it is very useful in that. And these are like view tab. So view tab is also like freeze panes. So what kind of splits or hide, how, what kind of sheet do you want to see, and how, what kind of orientation do you want. So मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगा आपको. तो कोई भी इशू होगा तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपका हेल्प करूंगा. जैसे मैं 2 लिख रहा हूँ तो ये राइट साइड जा रहा है, ये ए लिख रहा हूँ तो लेफ्ट साइड जा रहा है. तो इस तरह से जब भी नंबर लिखते हैं एक्सेल में, ये राइट साइड लेता है, जब भी लेटर लिखते हैं ये लेफ्ट साइड लेता है. यहाँ डिफरेंट टैब है हमारे पास. होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फॉर्मूला बार है, डाटा है, व्यू टैब है. सो इसमें काफी सारे ऑप्शन हैं जिसका हम यूज करके काफी हेल्पफुल वे में चार्ट या प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं. या एक्सेल के बेसिक बहुत सारे यूज हैं. मैं बेसिकली एक यूएस बेस्ड कंपनी में काम करता हूं जहां मैं एक्सेल और सीक्वल का यूज करता हूं. तो मेरा प्रयास रहेगा कि आप लोग के साथ सारे नॉलेज में शेयर करूं और इसको काफी आगे तक हम लोग ले जाएंगे. थैंक यू.